मु तीनटा क्वेश्चन देथले देवसी लक्ष्मी किए गोटे रेस्पॉन्स कलर नहीं तीनटा क्वेश्चन कार जानछ तीनटा क्वेश्चन एबे करे आईबीएम तमरो कैंपस रे पकैतला तीनटा क्वेश्चन हला कि गोटे रेस्पॉन्स कलनी गोटे मेसेज भी कलनी सर एटा केमती जदी आसलानी केमती हबो कि कोन गोटे गोटे माने गोटे सिंगल पर्सन भी कि गोटे पचारलानी गुड इवनिंग सर। रनिंग मोना देवसी क्वेश्चन देखतेलु यस सर। देखी थोइ दलु मना लानी ना ना सर एग्जाम अच्छी तो से तब मैं ये करती कि मते मेसेज करथला कि से विषय रे कि सर आमे एटा करिवु पछरे करिवु एग्जाम चलची पछरे करिवु कि गोटे सिंगल पर्सन तमर जदी इंटरेस्ट नथे रहिबन जदी मु मो तरफरु काई कि तम पई इंटरेस्ट पुट करिवु को मते खाली क्लास माने तम कोर्स सार दबार अछि मु कोर्स सार देब जेन सेमते इंटरेस्ट लागिवो कि भल एटा ठीक कथा तम निजे तो को In this session, we will be learned to identify thread priorities, implement thread synchronization and their threaded communication, implement the cache collection process, identify the features of the client or server architecture. এই সেশন রে তমরা থ্রেড র যেমতি আর প্রিভিয়াস সেকশন রে আমি পড়িতলে থ্রেড কোন কেতে প্রকার আমার থ্রেড আছে সিঙ্গল লেভেল থ্রেড এন্ড মল্টি লেভেল থ্রেড থ্রেড র প্রায়োরিটি কোন কোন আছে কোন কোন সেথরে সিঙ্ক্रोनाइजेबल আছে এই সেশন রে भी सेम जिंस डिस्कशन कराइछि कि थ्रेड रो प्रायोरिटी कोन आमे सेट करबो थ्रेड रो प्रायोरिटी हमरो को थ्रेड धर मोर मल्टीपल थ्रेड अप्लाई कराइछि तो को थ्रेड ता मोर प्रथमे रिक्वेस्ट मोर असेस करबो को थ्रेड ता मोर केते समय जाई होल्ड कर रखिबो को थ्रेड ता मोर केते समय जाई मोर इंप्लीमेंटेशन हबो एगुडा सब मोर थ्रेड प्रायोरिटी रो मोर सेट कराइ जेमति धर तमे का सहित कथा होच तुमको किए गोटे कॉल कला तो तुमर नोटिफिकेशन रहउची राइट तुम नोटिफिकेशन माने तुम से स्क्रीन रे शो करूची समवन कैन कॉल यू राइट तो सेटा किछि सेकंड जाय रहउची किछि मिनिट बे रहउची ए नो जे तमे जे जाय तमे फोन रे कथा होतो से जाय से तुमर होल्डिंग ता रखुतो किछि सेकंड सेटा होची थ्रेड ऑफ प्रायोरिटी तुम से थ्रेड ऑफ प्रायोरिटी केते अधिका तो सही अनुसार तुमर सेटा सेतिकी समय जाय होल्ड करो ऑटोमेटिक तापर कटि जो जेते जाय माने तमे कथा होचो राइट तो ए जो जिंसटा एटा थ्रेड प्रायोरिटी अनुसार होगा से आ गोटे जिंस धर तमे का गोटे कॉल करछो तार नॉट रीचेबल अछि राइट तो जेताले से रीचेबल पोजीशन को जेताले आसीबो जेताले नेटवर्क से रीच करिवो ऑटोमेटिकली तापाकू गोटे नोटिफिकेशन जिवो इट मींस कोन सेटा थ्रेड रो प्रायोरिटी अनुसार ताकू सेट करा जाय राइट Java runtime environment execute thread based on their priority. A CPU can execute only one thread at a time. Therefore, the thread that are ready for execution queue up for their turn to be executed by the processor. The thread are scheduled by using the fixed priority scheduling. Each thread has a priority that affects its position in the thread queue of the processor. A thread with a higher priority runs before thread with a lower priority. तो जेमिति नॉर्मल सेक्शन रे भी एडवांस टेक्नोलॉजी रे तमे जो फाइल टा बनैथिबो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल टा बनैथिबो सेटा तम लोअर कॉन्फ़िगरेशन रे इंस्टॉल हबो लोअर कॉन्फ़िगरेशन जोटा तमे बनैथिबो तमरो फाइल किछि बनैथिबो सेटा तमरो हायर कॉन्फ़िगरेशन रे तमरो इंस्टॉल हे जो डिटो सेम जिंस तो एठी हायर प्रायोरिटी जोटा अछि सेटा तमको प्रथमे प्रोसेस करबो लोअर प्रायोरिटी ता तमरो लेट रे प्रोसेसिंग करबो The thread priority are integer value in the range of 1 to 10 that specify the priority of one thread with respect to the priority of another thread. If the processor encounters another thread with a higher priority, the current thread is pushed back and the thread with the higher priority is executed.
the next thread of a lower priority start executing if a higher priority thread stop or becomes not runnable. A thread is pushed back in the queue by another thread if it is waiting for an input-output operation. A thread can also be pushed back in the queue when the time of which the sleep method was called on another higher priority thread is over, right? So completely तमरो गोटे प्रोसेसिंग हिसाब रे रहे कि को प्रोसेस टा तमरो जल्दी माने आगो तमे करिवार अछि को प्रोसेस टा तमे पछरे करिवार अछि से अनुसार तमर थ्रेड रो प्रायोरिटी को सेट करा जाय, राइट? कि मु जेंति तुमको आगुर कहतली जे गोटे प्रोग्राम रे जे कोनसी गोटे प्रोग्राम रे जे कोनसी लैंग्वेज रो मेन मेथड टा होची तमरो डिफॉल्ट थ्रेड ता छोड़ा जदि मु आउ किछि थ्रेड जदि मु इंप्लीमेंटेशन करूची मोर प्रोग्राम भीतर जदि एग्जीक्यूशन करिया पई ताहले ता ऊपर मते प्रायोरिटी सेट करिवार अछि जो प्रायोरिटी तमरो बेस माने बेस करिवो कि कोउटा तमरो एग्जीक्यूशन फास्ट हबो कोउटा तमरो एग्जीक्यूशन लेट रहबो ता पई तमे स्लीप मेथड भी यूज कर परिबो, राइट? Once a thread is created, its priority is set by using the set priority method declared in the thread class. The following code shows how to declare the set priority method. Public final void set priority int new priority. The thread can be set to a default priority by specifying the normal priority constant in the set priority method. Maximum priority is the highest priority that a thread can have. Minimum priority is the lowest priority a thread can have, and the normal priority is the default priority set for the thread. The synchronization of thread ensure that if two or more thread and needs to access a shared resource, then that resource is used by only one thread at a time. You can synchronize your code by using the synchronized keyword. Synchronization is based on the concept of monitor. A monitor is also known as a semaphore, is an object that is used as a mutually exclusive lock. All objects and classes are associated with a monitor, and only one thread can own a monitor at a given time. To enter an object monitor, you need to call a method that has been modified with the synchronized keyword. When a thread acquires a lock, it is said to have entered the monitor. During the execution of a synchronized method, the object is locked so that no other synchronized method can be invoked. The monitor is automatically released when the method completes its execution. The monitor can also be released when the synchronized method executes the wait method. When a thread calls the wait method, it temporarily releases the locks that it holds. In addition, the thread stops running and is added to the list of waiting threads for that object. Wait method use करा जेमते तमरा मोबाइल फोन रहू तमे मु जेमते कहली तमे जदी का साथे कथा होछ त मु जदी सेम टाइम रे आउ जने लोक जदी कि तम कॉल करछि तारो सेते सेही टाइम रे वेट मेथड टा यूज करा जाय माने से जो थ्रेड टा जो इंप्लीमेंट होछि ताकू वेट करा हला किछि समय. The following figure shows how synchronization is maintained among thread. Create start hobo running परे तमरो से जदी ताकू टर्मिनेट करिया पय चाहू डेट करिया पय चाहू टर्मिनेट कर परिबो ताकू जदी मॉनिटर करिया पय चाहू तो एंटर मॉनिटर रनिंग मॉनिटर देन रनिंग मॉनिटर रे सिग्नल कंडीशन तमे देखिबो तमरो सिग्नल कंडीशन केम दो जेमते हमर जूम रे जेतरा हमें करजे नेटवर्क जेतरा कटि जाउ जेतरा हम कटि जाउ पुरा राइट सेटा होची मोर सिग्नल कंडीशन. देन जदि मते सेही टाइम रे जदि जेमते तमे जेतरा मते एंटर करछो मोर मीटिंग को जेतरा एंटर करछो सेतरा मते ऑप्शन दोची एडमिन माने तमे अप्रूवल मु करले ही तमे एडमिट कर परियो तो सेटा तमे जेतरा एडमिट पय प्रोसेस पय रिक्वेस्ट पठोचो सेतरा तुमको होल्ड किछ समय पय होल्ड को जेते टाइम मु तुमको अप्रूव न करछि सेटा तमरो वेट कंडीशन में तम जीवो देन तमरो लीव मॉनिटर तमे हम जेतले जूम टाको जेतले लीव करूचे लीव मॉनिटर जे पुनते रनिंग पोजीशन को पळे आसे. The synchronized statement is used where the synchronization methods are not used in a class and you do not have access to the source code.
You can synchronize the access to an object of this class by placing the calls to the method defined by it inside a synchronized block. The following code shows how to use the synchronized block, synchronized object, then statement to be synchronized. Multi-threading element, the concept of pooling by a mechanism known as inter-process communication. A thread may notify another thread that the task has been completed. This communication between thread is known as inter-threaded communication. गोटे थ्रेड भीतर आ गोटे थ्रेड जदि तमे जदि यूज करूछ ताले ताको जे इंटर थ्रेडेड कम्युनिकेशन जेमती तमे जेमती गोटे ऑनलाइन प्रोसेस है अमेज़न नै जाओ अमेज़न रे तमे कोनोसी प्रोडक्ट को चूज करूछ चूज कला परे तापरे सेइथरे तमरो लिंक आछी गोटे जे पेमेंट मोड जेता क्लिक करूछ सेटा गोटे डिफरेंट सेक्शन को पळौची एंड सेठी तमे जेते जाय तमे पेमेंट प्रोसेसिंग करूछ से तमको कोन लिखुची डू नॉट प्रेस रिफ्रेश और बैक बटन राइट तो सेटा माने सेटा डिफरेंट पेज माने गोटे थ्रेड अछि ता भीतर आ गोटे थ्रेड तमरो इंप्लीमेंटेशन कराला तो ताको जे इंटर थ्रेडेड कम्युनिकेशन द वेरियस मेथड यूज्ड इन इंटर थ्रेडेड कम्युनिकेशन आर वेट मेथड informs the current thread to leave its control over the monitor and sleep for a specified time until another thread calls the notify method. The following code shows how to declare the wait method. Public final void wait throws interrupted exception. Notify method wake up a single thread that is waiting for the monitor for the object being executed. If multiple threads are waiting, one of them is chosen randomly. The following code shows how to declare the notify method. Right? जेतले तमरो कोनोसी नोटिफिकेशन जेतले आछी नोटिफिकेशन रे तम माने मल्टीपल थ्रेड तम जेतले अप्लाई करूछ सेतले तम मोबाइल नोटिफिकेशन आछी राइट नोटिफिकेशन आसला परे तमरो से ऊपर नोटिफाइड बहुत गुडा अछि सेठी जेते सब तुम थ्रेड एप्लीकेबल होची तमे कोन सब जिंस सीरियली देखछो तमे सेठी रैंडमली चूज करो धर मोर फेसबुक रु नोटिफाई आसी मोर व्हाट्सएप रु नोटिफाई आसी मोर ट्विटर रु नोटिफाई आसी मोर इंस्टाग्राम रु नोटिफाई आसी राइट सेठी मु चूज करछि रैंडमली कोनोसी गोटे नोटिफिकेशन को चूज करछि देन ता फाइल भीतर को मु बसुछि सेटा होछि नोटिफाई रे मोर जाय पब्लिक फाइनल void notify all wake up all the thread that are waiting for the monitor of the object. Deadlock occur when two thread have a circular dependency on a pair of synchronized object. The following figure shows the deadlock condition between the thread A and thread B. जेतले मोर thread A गोटे रिसोर्स को एक्सेस करूची एंड thread B रिसोर्स 2 को एक्सेस करूची सेम टाइम रे थ्रेड ए जदी रिसोर्स 2 को भी जदी एक्सेस करबो सेटा हेगला हमर डेडलॉक राइट माने गोटे टाइम रे गोटे सोर्स को एक्सेस करूची सेम टाइम रे जदी आ गोटे सोर्स को जदी एक्सेस करबो सेटा कोन हम डेड ही जेजिवो the precaution required to avoid deadlock are deciding the other order of the locking object and adhering to that order releasing the lock in the reverse order. The deadlock condition occurs when all the thread wait for the condition to be true, but since no thread is active to change the condition, all the thread are in the waiting state and the program does not progress further. A domain thread is a thread that runs in the background of a program and provides service to other thread. The set domain method is used to convert a thread to a domain thread. The following code shows how to set a thread 1 as a domain thread, thread1 dot set domain true. The is domain method is used to determine if a thread is a domain thread. The following code shows how to declare the is domain method, boolean b equal to thread1 dot is domain method. Garbage collection refers to automatically destroying the object created and releasing their memory for future reallocation. Right? Garbage collection protective program रे मोर थाए. Garbage collection काम कोन जेता तम कोनसी प्रोग्राम को तम एग्जीक्यूशन करछो से एग्जीक्यूशन हला परे जो तारो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो किबा तम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो सेउडा कोन मेमोरी जे स्टोर हो जाउची
तो कैवेज कलेक्शन कौन करिवो मेमोरी भितर तांको काम सरला परे ऑटोमेटिकली सेटा को से मेमोरी रिलीज कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम तुम जेते प्रोग्राम टाको सेही प्रोग्राम टाको एक्सिक्यूट करिवो तुमको माने मेमोरी फ्रेश भाबरे तुमको वैल्यू स्टोर करिया पे से अलाउ कैवेज कलेक्शन काम होची से The various activities involved in the cabbage collection are monitoring the object used by a program and determining when they are not in use, destroying objects that are no more in use and reclaiming their resource such as memory space. JVM performs cabbage collection when it needs more memory to continue execution of programs. You cannot explicitly reclaim the memory of a specific different object. The runtime class in Java encapsulates the JRI. The various methods of the runtime class used in memory management are static runtime dot get runtime method returns the reference of the current runtime object. Void GC माने cabbage collector invokes cabbage collection. Long total memory returns the total number of bytes of memory available in JVM. You can explicitly run the cabbage collector in Java to collect information regarding how large the object heap is or to determine the number of objects of a certain type that can be instantiated. The total memory method returns the total memory in the JVM, and the free memory method returns the amount of memory free in the JVM. You can run the cabbage collector explicitly by calling the GC method. एमिति तो तमर cabbage collection explicitly तमर run करेनी, automatically invoke हुए. जदि तमे ताकू explicitly ताकू प्रोग्राम लेखिबा टाइम रे ताकू जदि इंप्लीमेंट करिया पे चाहूछ ताले सेही टाइम रे तमे GC मेथड तमे यूज करबो. GC माने cabbage collection. The cabbage collector explicitly you need to perform the following step. Create an object of the runtime class. The following code shows how to create an object of the runtime class. Runtime r equal to runtime dot get runtime. Invoke the GC method of the runtime class to request cabbage collection. The following code shows how to invoke the cabbage collector r.gc. The client or server model is an application development architecture designed to separate the presentation of data from its internal processing and storage. The client request for services and the server services these requests. The requests are transferred from the client to the server over the network. The processing that is done by the server is hidden from the client. One server can service multiple clients. Multiple client can access only tomorrow gote server को access भी करि परिबो जेमति तम माने बस मु एडी बसी तम माने सेठी अछ तो हमें समस्त एट टाइम रे गूगल किबा जूम पेज को access करबा तो सर्वर तो गोटे ना तो तमे तम मशीन रु access कलो मु मशीन रु access कली बाकी अलगा पिला भी से मशीन को access कले तो multiple client can access one server. The server and client are not necessarily hardware component. The server and client can be program working on the same machine or on different machine. The server portion of a client or server application manages the resource share among multiple users who access the server through multiple clients. For example, web service. A web server that deliver an HTML page across internet to different web browsers. When computers communicate, they need to follow certain rules. Data is sent from one machine to another in the form of packets. Rules govern the packaging of the data into packets, the speed of transmission, and the reassembling of data to its original form. These rules are called network protocols. Network protocols are a set of rules and conventions followed by a system that communicate over a network.
some example of network protocol are TCP/IP, Transport Control Protocol or Internet Protocol, User Datagram Protocol, AppleTalk, and NetBeans UI user interface. Java provides a rich library of network-enabled classes that allow application to readily access network resource. These are datagrams that use UDP and socket that use TCP/IP. During the communication between the client and the server, the data must not be lost and must be available to the client in the same sequence in which it was sent by the server. TCP provides a reliable point-to-point communication channel for client or server application to communicate with each other. To communicate over TCP, client and server program establish a connection and bind a socket. Sockets are used to handle the communication links between application over the network. Transmission तमरा communication time रे गोटे machine रु आउ गोटे machine रे तमे जेटा data transfer करूचो via network रे तो network ऊपर गोटे control थिबा दरकार सेटा तमरा TCP provide कर ताकि via network रे तमरा जेमति data रा तमरा leakage न हो. Right. The advantage of the socket model using TCP over other communication models such as NetBeans user interface and AppleTalk are the server is not affected by the source of client request. The server services all requests as long as the client follow the TCP or IP protocol suite. Java was designed as a networking language. Java makes network programming easier by encapsulating connection functionality in the socket classes. The socket class to create a client socket and the server socket class to create a server socket. Socket is the basic class and support the TCP protocol. TCP is a stream network connection protocol. The socket class provides methods for stream input or output, which makes reading from and writing to socket easy. Server socket, it is a class used by the internet server program for listening to client requests. It does not actually perform the server. Instead, it creates a socket object on behalf of the client. The communication is performed through the object created. An internet server can be thought of a set of socket classes that provide additional capabilities called services. For example, of services are electronic mail, talent, and file transport protocol, FTP. Each services is associated with a port. A port is a numeric address through which provide requests such as request for a web page or proceed. जेकोनसी डिवाइस को तमे जेकोनसी जगह को तमे डाटा जेटा ट्रांसफर करूछो पोर्ट तमरा अवेलेबल हुए पोर्ट थ्रू आमे जानि परिबा जे को मशीन रु को एरिया रु मो पाखु मेसेज टा आसी. राइट. The TCP protocol request to two data items, the IP address and the port number. Internet protocol provides every network devices with a logical address called an IP address. The IP addresses is a 32-bit number represented as a series of 8-bit numbers, which is the range in a value 0 to 255. Eta tar dela port number tamara car kono. Port number tamara 21 hochi FTP, which transfer file. 23 hochi talent, which provides a remote plugin. 25 hochi SMTP. Gmail le dekhibo. Gmail को तमे जेटा Outlook से तो configure करियो सेटा तमरा SMTP and तुम्हारा POP तुम्हारा सेट करा जाए. SMTP कौन which deliver mail messages. 67 boot P, which provides the configuration at booting time. Right. तुम्हारा system को जेटा booting करा हुए माने जेटा formatting करा हुए booting करा हुए तम सेटा देखिबो गोटे 67 कोड आस्थिबो. 67 माने booting. 80 HTTP, which transfer web pages. 109 POP, which enables user to access mailboxes on remote system.
कोर जावा सरला तमर कोर जावा सरला हला आ समस्त इन्फॉर्म करिवो जे मु तम मानक ऊपर खुशी रे ना खुशी नाही हला